Good afternoon, everyone. Welcome to Bankersadda. Today we are going to discuss practice marathon for clerk mains reasoning day 18. So, move to question number first. Direction 1 to 5. Study the following information carefully and answer the given question. When a word and number arrangement machine is given an input line of words and numbers, it arranges them following a particular rule. The following is an illustration of input and rearrangement. तो जैसे कि एक हमें input given है, following some rule, ये अपने आप arrange हो रहा है some steps में और हमारे पे एक final output आ रहा है. तो हमें सबसे पहले find करना है कि what is the logic behind this input. तो अगर हम देखें तो आगे कोई भी लॉजिक हमें फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम अपना आउटपुट लास्ट स्टेप देखते हैं. तो लास्ट स्टेप में जैसे कि हमें दिख रहा है कि जो हमारे नंबर्स है, नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं हमें, लेकिन हमारा जो 45 है वो लास्ट में है, तो इससे हमें कोई डिफाइन नहीं हो रहा. और हमारे जैसे कि इसमें जो वर्ड्स है वो भी हमारे को समझ नहीं आया, क्योंकि जो वर्ड्स है उसके अंदर भी हमारा कोई पैटर्न दिख नहीं रहा. जो सीधा जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो हमें कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एम आ गया, डी आया, फिर क्यू आया, तो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं है. तो अब देखते हैं, अब स्टेप वाइज चेक करते हैं कि कैसे हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट में पर्टिकुलर पैटर्न पे फॉलो कर रहा है. तो जो हमारा स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा वर्ड आ रहा है क्योरा, और हमारा लास्ट में एक नंबर रीअरेंज हो रहा है 29. तो ये तो हमें पता चल गया जो अरेंजमेंट है उसमें हमारे दोनों एंड से हो रही है साइमल्टेनियसली. वर्ड हमारे लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं, नंबर हमारा राइट हैंड पे आ रहे हैं. अगर हम स्टेप 2 में भी देखें तो फिर जो हमारा फर्स्ट वर्ड अरेंज हुआ उसके इमीडिएट राइट सेकंड वर्ड आ गया डायग्नोज. ऐसे ही हमारा जो 29 था उसके इमीडिएट राइट 38 आ गया. और जब अभी पैटर्न की बात करें तो जो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा ना तो प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ना कंपोजिट नंबर वाला लग रहा है. तो जो नंबर का जो इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है वो पैटर्न ये है कि जो जो नंबर्स हैं इनके डिजिट्स का डिफरेंस, जैसे 29 है, 38 का डिफरेंस है 5, 45 का है 1, 48 का है 4, और जो 29 का है वो 7. तो जो जिसका सबसे ज्यादा डिफरेंस हुआ है उनके डिजिट्स का वो सबसे पहले अरेंज हुआ. देखो पहले 29 आया, फिर 38 आया, उसके बाद 48 आया और लास्ट में हमारा 45 आया. और अगर हम ऐसी वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स में ऐसा हो रहा है कि जो वर्ड्स है वो अरेंज इन डिक्रीजिंग मैनर अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द वोवल प्रेजेंट इन द वर्ड. तो जो भी उसमें वोवल प्रेजेंट है उनकी प्लेस वैल्यू का सम है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा है. देखो अगर हम क्योरा में देखें, क्योरा में हमारा ए आ रहा है, ओ आ रहा है और यू आ रहा है. तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, ओ की होती है 15 और यू की होती है 21. तो जिसका सम होता है 37. तो सबसे पहले तो ये भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है. सबसे पहले जो लार्जेस्ट सम है जैसे डायग्नोज है, डायग्नोज के अंदर अगर हम देखें तो जो वोवल्स है वो है ए, आई, ओ और ई, 4 वोवल है. इनका सम जो प्लेस वैल्यू का होगा A1, I9, 15 और 5. तो इसका जो सम होगा वो होगा 30. तो सबसे पहले क्यों आ रहा है, फिर डायग्नोज आया, उसका जो हमारा स्टेप 3 है उसमें मैथ्स आया. तो मैथ्स के अंदर हमारे कितने थे, मैथ के अंदर खाली हमारे एक ही वो वोवल है ए, तो इसका जो वैल्यू होगी वो 1, उसके बाद वो अरेंज हुआ था. तो अब देखिए जो हमारे को इनपुट ऑफ गिवन है, अब अपना आउटपुट निकालते हैं जो हमें पैटर्न पता चला उससे. तो जो इसका स्टेप 1 होगा, जो स्टेप 1 होगा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका डिफरेंस क्या है. 9 में से 7 गया 2, 38 का 5 आ जाएगा डिफरेंस, 9 जो 19 है उसका 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, 26 का 4 आ जाएगा. तो सबसे पहले जो हमारा नंबर अरेंज होगा राइट हैंड पे वो होगा 38, 19. तो सबसे पहले 19 अरेंज हो गया. और जो हमारा वर्ड सबसे पहले आएगा, अगर हम बात करें वोवल्स की, तो जो फर्स्ट में वोवल है A1, O15, I9, तो जो हमारा इसका सम हो जाएगा वो हो जाएगा 25. सेकेंड हमारा वर्ड है समर. तो समर के अंदर हमारे जो U21 और E5 दो ही वोवल है, तो इसका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 26. देन जंक्चर की बात करें तो जंक्चर में 2 बारी U आ रहा है, तो 2 बारी 21 हो गया प्लस 5, तो 42 प्लस 5 47. देन जो हमारा लास्ट वर्ड है ओमी, ओमी के अंदर हमारे 2 वोवल आ रहे हैं, ओ यानी 15 प्लेस वैल्यू, आई मतलब 9 प्लेस वैल्यू, तो 24 हो जाएगा.
तो जो अब एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो सबसे पहले जिसका प्लेस वैल्यू है वोवल्स का सम सबसे ज्यादा है, पहले वो आएगा। तो सबसे पहले अरेंज होगा जंक्चर, बाकी सारा एज इट इज आएगा। तो जंक्चर के बाद आ जाएगा अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के बाद आएगा 79 समर, समर के बाद हमारा आ जाएगा 38, जंक्चर रेंज हो चुका है, 19 में रेंज हो चुका है। देन ओमी आ जाएगा, देन 26, फिर लास्ट हमारा 19 था। ऐसे हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 में अगर हमारा आप देखो जंक्चर अरेंज हो रखा है तो जंक्चर के बाद आएगा हमारा समर। सबसे पहले जंक्चर आएगा, फिर उसके इमीडिएट राइट में आ जाएगा समर, समर के बाद आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग, सेम टू एज इट इज है। तो समर के बाद आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के बाद आ जाएगा 79, 79 के बाद आ जाएगा ओमी 26, 19 और जो नंबर अरेंज हुआ वो है 38। देन ऐसी जो हमारा स्टेप थर्ड होगा, स्टेप थर्ड में भी ऐसे आ जाएगा। सबसे पहले जंक्चर, समर, समर के बाद जो हमारा वर्ड आएगा अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग आ जाएगा। देन अकॉर्डिंग के बाद आएगा 79, अकॉर्डिंग आ जाएगा। और अकॉर्डिंग के बाद हमारा आएगा ओमी, ओमी के बाद आ जाएगा 79, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। अकॉर्डिंग हमारा ऑटोमेटिकली अरेंज है तो ऑटोमेटिक के बाद ओमी आएगा, ओमी के बाद हमारा 79 आ जाएगा, 79 के बाद आएगा हमारा 19, देन 38, उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाएगा 26। ऐसी जो इसका लास्ट स्टेप बचेगा हमारा, उसमें सबसे पहले अरेंज होगा जंक्चर, वर्ड्स हमारे सारे अरेंज हो रखे हैं। तो इसमें लास्ट में हमारा जो नंबर अरेंज होगा वो 79 है, जो एक्सट्रीम राइट हैंड पे हो जाएगा हमारा। सो अब हमारा फाइनल आउटपुट आ रखा है। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या पूछे इसके ऊपर। जो फॉलोइंग इनपुट है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमारे से पूछा है विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट इन स्टेप 4। 4 की बात करें तो हम हमारा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है ओमी और थर्ड फ्रॉम द राइट है 38, तो इनके बिटवीन में है 19, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 19। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। तो कौन सा स्टेप नंबर फॉलोइंग आउटपुट है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो ओमी के बाद 79 है ये हमारा थर्ड में आ रहा है, जंक्चर, समर, अकॉर्डिंग, ओमी 79, 19, 38, 26। तो जो हमारा ये स्टेप नंबर होगा वो होगा स्टेप थर्ड। तो ऑप्शन ए स्टेप थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओमी इन स्टेप थर्ड। ओमी की पोजीशन पूछी है, तो या तो देखो ओमी जो है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है। अगर फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और अगर हम देखें, अगर हमारा राइट से होता तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्रॉम द राइट होता, जो हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा यही ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इन स्टेप 2, स्टेप 2 के बारे में इन्होंने बात करी है कि जो स्टेप 2 है, व्हाट इज द सम ऑफ सेवंथ एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अगर स्टेप 2 में सेवंथ एलिमेंट देखें वो 19 है, और एट्थ एलिमेंट देखें तो वो 38 है। और 38 और 19 की बात करें तो जो इसका सम हो जाएगा वो हो जाएगा 57, जो कि है ऑप्शन सी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट would be at third position from the left hand in step third। थर्ड पोजीशन पूछा है वो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है हमारा अकॉर्डिंग। तो जो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी अकॉर्डिंग। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
Direction 6 to 10. Read the following passage carefully and answer the questions given below it. 8 friends A, B, C, D, E, F, G, and H like different fruits: banana, guava, cherry, apple, orange, grapes, mango, and watermelon. And all of them are seated around a square table. तो seated around a square table है, two on each side facing the center. तो जो हमारा अरेंजमेंट बनेगा वो हमारा अरेंजमेंट ऐसे बनेगा. दो केस लेके चलने पड़ेंगे क्योंकि जो दो पर्सन बैठ रहे हैं तो वो कौन सी भी साइड भी बैठ सकता है, कोई भी पर्सन हमारा. तो जैसे इसमें स्टार्टिंग कंडीशन हमें गिवन है, सी सिट टू द राइट ऑफ बी. तो बी हमारा यहाँ पे सिट कर सकता है, बी हमारा यहाँ पे सिट कर सकता है. एंड बी लाइक्स चेरी. तो उसके बाद है सी सिट्स टू द राइट ऑफ बी. तो बी के अपोजिट बैठ रहा है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में हमारा सी यहाँ पे बैठ रहा है. और जो उसके बाद हमें कंडीशन गिवन है वो गिवन है जी इज सेटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. जो जी है हमारा वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है. तो जी और एफ के बीच में 1% सेट कर रहा है. देन एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और बी. अगर एफ सी और बी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो एफ के लिए दो ही पोजीशन है, या तो एफ यहाँ सेट करेगा या एफ यहाँ सेट करेगा. ऐसे जो हमारा सेकंड केस है उसके अंदर भी एफ के लिए दो पोजीशन का वैकेंट है, या तो एफ यहाँ पे सेट करेगा या यहाँ पे सेट करेगा. देन हमें गिवन था कि जो जी है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है. अगर देखो अगर हमारा जी यहाँ पे सिट, सेकंड केस में अगर जी यहाँ पे एफ यहाँ पे सिट कर रहा है तो एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में जी है, तो वहां पे सी ऑलरेडी प्लेस्ड है. तो एफ की पोजीशन इसमें डिफाइंड हो जाएगी कि एफ हमारा सी के अपोजिट सिट करेगा सेकंड केस में. और ऐसी जो हमारा फर्स्ट केस था उसके अंदर जो एफ की दो पोजीशन थी, अगर एफ अगर हमारा इस पोजीशन पे आएगा तो एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में हमारा सी ऑलरेडी सिट कर रहा है, तो एफ यहाँ पे सिट नहीं करेगा. एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी सिट करेगा. देन इसके बाद हमें गिवन है द वन हु लाइक्स बनाना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ. जो बनाना लाइक करता है वो इमीडिएट नेबर ऑफ एफ है. हमारा इसमें सी की पोजीशन डिफाइन होगी थी कि सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी लाइक्स चेरी, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. तो एफ यहाँ आ जाएगा और एफ के सेकंड लेफ्ट में जी है, तो जी सी का नेबर हो जाएगा, और जी इसमें यहाँ पे आ जाएगा, सी का नेबर हो जाएगा. देन हमें गिवन है 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द पर्सन हु लाइक ग्रेप्स. अगर 3 पर्सन की बात करें तो 3 पर्सन का मतलब हो जाएगा हमारा अपोजिट का. तो 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द पर्सन हु लाइक ग्रेप्स. तो बी के जो 1 2 3 तो जिसमें जो जी है वो ग्रेप्स लाइक करेगा दोनों केसों में. एंड द वन हु लाइक्स बनाना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ. जो बनाना लाइक करता है वो इमीडिएट नेबर ऑफ एफ है. तो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, दोनों केसों में. या तो बनाना वाला इस साइड होगा या बनाना वाला इस साइड होगा. और अगर हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद हमें गिवन है बी सी एंड ऑल्सो देयर इमीडिएट नेबर्स डू नॉट लाइक एप्पल. जो बी और सी के नेबर है और वो दोनों भी एप्पल लाइक नहीं करते, तो यानी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे और यहाँ ये एप्पल लाइक नहीं करते. तो एप्पल के लिए इसमें एक ही पोजीशन बचेगी, या तो एफ एप्पल लाइक करेगा या उसका जो इमीडिएट नेबर है वो एप्पल लाइक करेगा. और अगर हम इसमें भी बात करें सेकंड केस में, तो सी के इमीडिएट नेबर और हमारे बी के इमीडिएट नेबर. तो एप्पल के लिए दो जगह बची, या तो एफ एप्पल लाइक करेगा या तो एफ का जो इमीडिएट लेफ्ट में पर्सन बैठ रहा है वो एप्पल लाइक करेगा. देन हमें इसमें कंडीशन गिवन है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु लाइक एप्पल एंड डी. अगर देखो एप्पल यहाँ पे सिट करेगा तो उसका वन
छोड़ के लेफ्ट में हमारा सी बैठा है और 1 छोड़ के लेफ्ट में हमारा एक प्लेस वैकेंट है। अगर एफ एप्पल लाइक करेगा तो डी के डिफाइन नहीं होगी प्लेस, तो इसमें डी एफ एप्पल लाइक नहीं करेगा। एफ का इमीडिएट लेफ्ट वाला पर्सन एप्पल लाइक करेगा। अगर एफ का इमीडिएट लेफ्ट वाला पर्सन एप्पल लाइक करेगा तो जो बनाना की पोजीशन थी वो हमारी फिक्स हो जाएगी। और इसमें ये आ जाएगा कि जो हमारा जो डी है, डी बनाना लाइक करेगा। और ऐसी जो केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट की बात करें तो जो एफ है, अगर एफ एप्पल लाइक करेगा तो डी और एप्पल वाले में ओनली 1% सिट कर रहा है, तो डी की कोई पोजीशन नहीं होगी क्योंकि सी और बी ऑलरेडी सिट है। तो जो एफ का इमीडिएट नेबर था वो बनाना लाइक नहीं करेगा, वो एप्पल लाइक करेगा जो इमीडिएट लेफ्ट में था। और एफ के इमीडिएट राइट वाला बनाना लाइक करेगा और जो कि डी सिट कर रहा है वहां पे। सो अब आगे कंडीशन देखते हैं। देन इसमें हमें गिवन है द पर्सन हु लाइक ऑरेंज एंड वाटरमेलन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अगर ऑरेंज और वाटरमेलन की बात करें तो वो इमीडिएट नेबर है, या तो सी और सी का इमीडिएट नेबर वाला लाइक करेगा, या फिर ये जो सी के जो इमीडिएट लेफ्ट में दोनों पर्सन है वो दोनों लाइक करेंगे। दोनों कंडीशन में हमारा ऐसे ही होगा। और जो हमारे सेकंड केस है उसके अंदर अगर हम दो वैकेंट कंडीशन देखें तो सी उसका नेबर या फिर सी के दोनों इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन ऑरेंज और वाटरमेलन लाइक करेंगे। तो अभी से साइड में रखते हैं कंडीशन को। देन इसके बाद हमें कंडीशन गिवन है सी लाइक्स नीदर वाटरमेलन नॉर ऑरेंज। अगर सी वाटरमेलन और ऑरेंज दोनों लाइक नहीं करता तो सी के इमीडिएट नेबर ही लाइक करेंगे। तो सी के जो इमीडिएट नेबर है वो या तो वाटरमेलन या ऑरेंज लाइक करेंगे। ये इंटरचेंज भी हो सकता है। केस फर्स्ट में भी ऐसे ही होगा कि सी लाइक नहीं करता तो जो सी का इमीडिएट नेबर है दोनों वो लाइक करेंगे। अब बात करें जो हमें नेक्स्ट कंडीशन गिवन है इसके अंदर, वो ये है कि जो ओनली 1%, इसके बाद हमें कंडीशन गिवन है ओनली 1% सिट बिटवीन ए एंड द पर्सन हु लाइक गुआवा। ए और जो गुआवा लाइक करता है उन दोनों के बीच में खाली एक ही पर्सन सिट कर रहा है। तो इसमें जैसे कि ए है तो हमारी ए की पोजीशन एंड ए डज नॉट लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। ए एप्पल और ऑरेंज लाइक नहीं करता तो ए हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ए या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। और अगर ए इस साइड आया तो वो वाटरमेलन, ए का डिफाइन हो गया कि ये हमारा वाटरमेलन नहीं लाइक करता है, पर ए की भी हमारी पोजीशन डिफाइन नहीं हुई। तो ओनली 1% सिट बिटवीन ए एंड द पर्सन हु लाइक गुआवा। अगर हम इसमें देखें कि अगर ए यहाँ पे सिट करता है तो ए के अगर इमीडिएट लेफ्ट में देखें तो डी है जो बनाना लाइक करता है, तो यहाँ तो गुआवा आएगा ही नहीं। तो गुआवा, सी गुआवा लाइक करता है, ये कंडीशन आएगी हमारे पे। और अगर जो ए है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी पे बैठ रहा है तो जो हमारा गुआवा है, गुआवा के लिए कोई प्लेस नहीं है क्योंकि बी चेरी लाइक करता है और जी ग्रेप्स लाइक करता है। तो ए की पोजीशन इससे डिफाइन हो जाएगी कि ए वाटरमेलन लाइक करता है और बी के इमीडिएट राइट में बैठा है, और ए के जो इमीडिएट राइट में बैठा होगा वो ऑरेंज लाइक करता है। ऐसी जो हमारा सेकंड केस है, अगर हम सेकंड केस की बात करें तो ए की बात करें, ए और गुआवा की बात करेंगे तो ए की पोजीशन इसमें फिक्स हो जाएगी कि अगर सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा तो हमारे इसमें गुआवा की पोजीशन डिफाइन नहीं होगी, तो ए बी के इमीडिएट राइट में बैठेगा और वाटरमेलन लाइक करेगा, और जो ए के इमीडिएट राइट बैठेगा वो ऑरेंज लाइक करेगा। देन ए और गुआवा जो लाइक करता है उन दोनों के बीच में एक पर्सन है, तो सी जो है वो गुआवा लाइक करेगा दोनों केसों में। देन इसके बाद हमें गिवन है ए डजंट लाइक एप्पल एंड ऑरेंज और ई डजंट लाइक एप्पल। अगर ई एप्पल लाइक नहीं करता तो जो ई है वो ऑरेंज लाइक करेगा। ई एप्पल नहीं लाइक करता तो ई हमारा ऑरेंज लाइक करेगा, और जो हमारा लास्ट पर्सन बचा वो बचा एच, तो एच हमारा एप्पल लाइक करेगा।
सो ये हमारे कंडीशन आई है। और जो हमारा एफ बचा, तो जो एफ है, तो जो इसमें एफ है, एफ लाइक करेगा हमारा मैंगो। सो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या गिवन है। अगर हम देखें दोनों जो हमारे केस बने उसके अंदर पैटर्न हमारे दोनों सेम ही हो रहे हैं कि डी है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठ रहा है, बी के इमीडिएट राइट में ए बैठ रहा है, ए के इमीडिएट राइट में ई बैठ रहा है, और ई के इमीडिएट राइट में सी गावा, गावा के इमीडिएट राइट में जी ग्रेप्स, देन एच एप्पल। तो हमारा कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम है। बस हमारा इसमें जो दोनों केस बने इसके अंदर एक ही डिफरेंस आ रहा है उनका पोजीशन पे, कि बी हमारा किसी भी पोजीशन पे सिट कर रहा है। तो अगर हम देखें कोई कंडीशन गिवन है केस एलिमिनेट करने के लिए कि नहीं, अगर हम गौर करें तो हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे जो इस केस को एलिमिनेट कर रहा हो कि बी सी एंड ऑल्सो देयर इमीडिएट नेबर डू नॉट लाइक एप्पल। तो ऐसी कोई कंडीशन इसमें गिवन नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमारे को क्वेश्चन क्या गिवन है जो हमारी सिटिंग आई है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग जी। तो इसमें पूछा है कि जी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है। तो अब देखें कि इसमें गिवन है हमें जी लाइक्स गुआवा, तो जो जी है वो ग्रेप्स लाइक करता है, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एच एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो एच और सी है इमीडिएट नेबर ऑफ जी के, तो ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। देन वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द पर्सन हु लाइक वाटरमेलन, जी एंड द वन हु लाइक वाटरमेलन, दो पर्सन सिट करते हैं, या तो 1 2 3 4 5 पर्सन, 4 पर्सन सिट करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा जो हमारे दोनों केस बन रहे हैं दोनों में। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो जी हमारा थर्ड टू द राइट बैठ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा दोनों केसों में। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग डज लाइक ऑरेंज। तो जो ऑरेंज आया था वो ई लाइक करता है ऑरेंज को, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ई। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे से पूछा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड द पर्सन हु लाइक वाटरमेलन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पर्सन हु लाइक वाटरमेलन। अगर देखें तो 1 2 3 3% सिट करते हैं, तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है। तो अगर हम देखें एच लाइक्स एप्पल, ऑप्शन बी है जो, तो ये हमें इसमें ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने सबसे छोटा ऑप्शन उठाया और एच लाइक्स एप्पल आ गया, तो हमें कोई और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका जो 9 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एच लाइक्स एप्पल। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो जो डी के इमीडिएट नेबर थे, डी के जो इमीडिएट नेबर है वो है बी और एफ। बी और एफ, तो बी हमारे को खाली इसमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सी, और एफ है, अगर हम एफ देखें तो एफ मैंगो लाइक करता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बी एंड द पर्सन हु लाइक मैंगो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कोडेड कोडिंग डिकोडिंग है कि कोई जो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग है वो 3 कंडीशंस में फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कंडीशन क्या है। तो जो ये कंडीशन है वो ये है कि लेटर जो ये एम के एच आर बी एन ई टी डी जे आई ए क्यू एफ पी, ये सिंबल्स को, डिजिट और सिंबल इनको डिफाइन करते हैं, इनके कोड है। तो अब हमें ना कि कोडिंग डिकोडिंग फाइंड करनी है। जो हमारा
जैसे कुछ कंडीशन हमें गिवन है, कंडीशन फर्स्ट हमें गिवन है, इफ द वर्ड एंड द लास्ट लेटर आर कंसोनेंट, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कंसोनेंट होंगे, अगर फर्स्ट एंड लास्ट कंसोनेंट है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट लेटर, तो दोनों के जो कोड होगा वो फर्स्ट लेटर का कोड होगा। जैसे कि जो इसमें क्वेश्चन में हमारे से पूछा है TABDRE का पूछा है कोड हमारे से, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट हमारा कंसोनेंट है, लास्ट वोवल है, तो फर्स्ट कंसोनेंट है, लास्ट लेटर इज वोवल, तो इसमें सेकंड हमारे कंडीशन अप्लाई होगी। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है इसमें कि इन दोनों के कोड इंटरचेंज कर जाएंगे। तो ई का अगर हम कोड देखें तो जो ई का कोड होगा, तो इसमें जो हमारा ई का कोड है, ई का कोड 7 है, तो 7 स्टार्ट में आना चाहिए, तो ऑप्शन बी और सी में 7 स्टार्ट में आ रहा है, तो हमारे बाकी ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे। और हम लास्ट का देखें तो जो लास्ट का कोड है टी, टी का इसमें कोड है 9, तो 9 लास्ट में आना चाहिए, तो या तो देखो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। देन इसके बाद अगर हम देखें तो ए और बी का कोड है, तो ए का जो हमारा कोड है वो है 3, बी का कोड है हैश, एंड एन का कोड है @ देन इसमें डी का जो कोड था, डी का कोड था हमारा @ एंड आर है, जो आर का हमारा कोड था 2, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में हमारा इसमें पूछा है कि व्हाट इज द कोड फॉर QHFKAN। अब हम इसमें देखें कि हमारा जो फर्स्ट है और लास्ट दोनों ही हमारे कंसोनेंट है, तो इसमें कंडीशन 1 अप्लाई होगी, कंडीशन 1 अप्लाई होगी इसमें, तो कंडीशन 1 अप्लाई होगी तो इन दोनों के जो कोड है वो कोड ऑफ द फर्स्ट लेटर हो जाए, फर्स्ट लेटर हो जाएंगे। तो जो इसका जो कोड होगा वो होगा, क्यू का जो हमारा कोड है वो है 4, तो एन का भी कोड 4 हो जाएगा, दोनों लास्ट में हमारे सेम आ रहे हैं, ऑप्शन ए है ऑप्शन डी में, बाकी हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे बी और सी। देन एच का जो हमारा कोड है, एच का हमारा कोड है कॉपीराइट, एफ का हमारा कोड है डॉलर, के का हमारा कोड है इसमें 1, एंड ए का कोड है हमारा इसके अंदर 3, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4 कॉपीराइट डॉलर 134, तो 12th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे से कोड पूछा है IAJEPI का, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों हमारे वोवल हैं, तो इसमें हमारी कंडीशन 3 अप्लाई होगी, जिसमें हमारा ये था कि बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वोवल्स, बोथ आर टू बी कोडेड एज द लास्ट लेटर, तो लास्ट लेटर आई, तो आई से दोनों कोड होंगे। तो जो इसमें आई का कोड है वो है %, तो फर्स्ट और लास्ट का कोड हो जाएगा %, या तो ऑप्शन सी होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो बाकी ऑप्शन अगर चेक करें जल्दी जल्दी, तो ए का कोड है 3 एंड जे का कोड है 6, I36, ई का हमारा कोड है 7 और पी का हमारा कोड है स्टार। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। NRJTBP, तो इसमें जो हमारे फर्स्ट और लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें कंडीशन फर्स्ट अप्लाई होगी हमारी कि अगर दोनों कंसोनेंट है तो जो इन दोनों का कोड होगा वो कोड फॉर द फर्स्ट लेटर होगा, दैट इज एन, और एन का हमारा कोड है, देन आर का हमारा कोड है, आर का कोड है हमारा 2, जे का कोड है हमारा 6, टी का कोड है 9 एंड बी का कोड है हमारा हैश। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। सो नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे से इन्होंने पूछा है कि मार्क है, मार्क स्टार्ट मूविंग इन साउथ डायरेक्शन, जो मार्क है वो साउथ डायरेक्शन में मूव करता है।
मार्क अगर साउथ डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम हिज हाउस, ये उसका हाउस हो गया, यहाँ से वो साउथ डायरेक्शन मूव करता है। एंड आफ्टर मूविंग 25 मीटर ही टुक अ राइट टर्न, तो राइट टर्न लेगा तो वो इस साइड जाएगा। एंड मूव 40 मीटर, 40 मीटर मूव करता है टू रीच हिज अंकल हाउस। अगेन मार्क स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड्स, तो वहां से अंकल हाउस है वो साउथवर्ड स्टार्ट करता है मूव करना। एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 50 मीटर, तो 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स 80 मीटर, तो लेफ्ट टर्न लेता है और 80 मीटर ट्रेवल करता है वो टू रीच हिज आर्ट होम। यहाँ पे अब उसका आर्ट होम आ गया है। एंड हमारे से इसमें क्वेश्चन पूछा इन्होंने, क्वेश्चन में पूछा इन विच डायरेक्शन हिज आंट हाउस इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू हिज हाउस, तो आंट हाउस पूछा है हिज हाउस से, तो जो आंट हाउस होगा हिज हाउस से वो हमारा साउथ ईस्ट होगा, तो जो इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी साउथ ईस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hello students, welcome to this session. So today is the day 18 of the practice marathon for IBPS Clerk mains, and today we are going to discuss the English language quiz of 12th January, that is of day 18. So before discussing, I would like to tell you कि clerk mains का exam is scheduled on 12th of January. So just about a week is left for the exam, and we are conducting a face-off for the clerk mains examination. And this face-off is a full-length test which is free of cost. You just have to put the coupon code FACE19 and there you go. So this can be a good opportunity for you to test yourself where you stand amongst the competition. And this face-off will be conducted on 13th of January. So do make the most of this opportunity. Now let's start. The topic for today's quiz discussion is parajumbles, or you can say sentence rearrangement. This is a very important topic for your prelims as well as your mains examination. And if you're able to solve this question, then near about 5 to 6 questions you will get regarding this topic, and you can score good marks in this topic. Let's start with the directions. Directions 1 to 5. Answer the following questions after rearranging the following sentences into a coherent paragraph and identify the sentence that doesn't fit in the context of the paragraph. You have been given 7 sentences. You have to rearrange these, and there is one sentence which does not fit or is incoherent. You have to exclude that statement and rearrange the rest of these to make a meaningful paragraph. Now, for what is the basic, what is the starting thing that you have to do? First of all, you should go through all the statements so that you get an idea about what the passage will be based on. ठीक है, पूरा एक बार पढ़ लीजिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये किस पे बेस्ड है. After that, choose the opening statement for your paragraph. Now let's see. Interestingly, the CSO's growth estimate for 2018-19 appears conservative and is lower than the estimates made by institutions such as the Reserve Bank of India and the World Bank. The GDP growth rate for the full year is projected to be at 7.2%, which is significantly higher than the growth rate of 6.7% achieved last year. Sectors such as manufacturing and construction, for instance, are projected to grow at a healthy pace of 8.3 and 8.9% respectively, both of which are higher than the growth rate of below 6% that each sector witnessed last year. The first advance estimate of GDP growth for 2018-19 released by the CSO on Monday paints a mixed picture of the economy. If you will read this statement, you can find out that this is the opening statement. ठीक है, द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी, ये आपका पैसेज जो है जीडीपी पे बेस बनेगा. तो अब
शुरुआत हो रही है that the first advance estimate of GDP growth for 2018-19 released by Central Statistics Office on Monday paints a mixed picture of the economy. That means D will be your opening statement. Further, if you'll see, now this is the opening statement. Next, if you read this, the GDP growth rate for the full year is projected to be 7.2%, which is significantly higher than the growth rate of 6.7% achieved last year. पहले तो बताया कि एक GDP estimate आया, उसके बाद GDP estimate क्या आया? 7.2%. That means B will be your second statement. So your B is done and you are done with D. Now let's look. अगर आप इसके बाद F देखेंगे, many sectors of the economy are projected to do better than they did last year in the aftermath of the twin shocks of demonetization and the rollout of the goods and services tax. यहाँ पर फर्दर लास्ट ईयर की बात कही है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए फर्दर आपका जो स्टेटमेंट आएगा वो F आएगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट अगर आप C देखें, सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन for instance, are projected to grow at a healthy pace of 8.3% and 8.9% respectively, both of which are higher than the growth rate of below 6% that each sector witnessed last year. ये भी अब मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है कि इसका अब की ग्रोथ क्या है और लास्ट ईयर क्या था, तो ये फर्दर एक लिंक बना रहा है. Next, if you go to statement A, interestingly, the CSO's growth estimate for 2018-19 appears conservative and is lower than the estimates made by institutions such as Reserve Bank of India and the World Bank. ठीक है. अब इस ग्रोथ एस्टिमेट के बारे में एक और बात कही जा रही है कि इट इज लोअर देन व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक हैड प्रेडिक्टेड. तो अब आपका ए आ जाएगा. फर्दर, इफ यू गो टू जी, a worrying trend in the economic data is the recent sequential deceleration in growth over consecutive quarters. According to CSO, growth is likely to slow down considerably from the average of 7.6% recorded during the first half of the current fiscal year to around 6.8% in the second half. Now, this will be your last statement. ठीक है. Now, अगर आप E देखें, the composition scheme currently allows companies with an annual turnover of up to 1 crore to opt for it and file returns on a quarterly basis at a nominal rate of 1%. ये आपका यहाँ पर GDP की बात नहीं कर रहा है, तो जो आपका इनकोहेरेंट सेंटेंस है वो यहाँ पर E हो जाएगा और जो आपका सीक्वेंस बन के आएगा वो आएगा DBFCAG. आपको लिंक देखना होता है एक के बाद एक कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ जुड़ रहा है. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हमारा जो सीक्वेंस था वो था DBFCAG and E was redundant. Now let's see. Considering the statement D, अच्छा आपको ये भी दिया हुआ है कि D जो आपका है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है. Which one among the following statements does not belong to the coherent paragraph? As you have seen, as you'll see, E जो है आपका इनकोहेरेंट हो जाता है. ठीक है, तो E हो जाएगा. ये क्वेश्चन 2 है. क्वेश्चन 1 है, considering statement D, this one as the first statement, which one among the following pairs is consecutively related? Consecutively मतलब एक के बाद एक. तो अगर आप देखिए अपना रीअरेंजमेंट, तो कंजिक्यूटिवली आपका कौन सा आ रहा है? आपका BF जो है कंजिक्यूटिवली आ रहा है, तो E हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. इसमें आपसे क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द रीअरेंज पैराग्राफ. अब आपका सीक्वेंस क्या आया था? ये आया था. किस में दिया है ये? ऑप्शन बी में. नेक्स्ट, what is asked? Which of the following statement should be the last sentence after the rearrangement? Last sentence आपका कौन सा है? G है. G किस ऑप्शन में है? A. Further, which of the following statement should be the fourth sentence after the rearrangement? अब आप देखिए तो फोर्थ कौन सा है आपका? फोर्थ है C. C किस ऑप्शन में है? C ऑप्शन में है. Moving towards the next set of the questions. ये भी आपका पैराजम्बल्स है.
Rearrange the following sentences A, B, C, D, and E in the proper sequence to form a meaningful paragraph and then answer the questions given below. Now 5 sentences are given. You have to put them in a sequence to form a meaningful paragraph. Now let's start. If you look at these statements, you'll find that E will be your opening statement here. I've never been to Niamgiri in Odisha, but what is playing out there since July 18 is a drama that has people like me mesmerized even at this distance. तो ये आपकी एक नियामगिरी के बारे में बात शुरू हो रही है उड़ीसा में, तो ई जो है आपका यहाँ ओपनिंग स्टेटमेंट होगा. फर्दर सी देखें. For in those thickly forested hills, where under the rich and diverse plants and animal life, above the soil lie valuable deposits of bauxite underneath, an environmental battle of an epic scale is being fought. Further, इन्हीं hills या इस एरिया के बारे में एक elaboration दी गई है, तो EC आ जाएगा. Further, if you look at statement B, on the one side are some 8,000 Dongriya, Quant and other tribals, sometimes referred to as primitive tribes. Further, अब इसकी tribes की बात हो रही है. ठीक है. Next देखिए, on the one side के बाद obviously on the other आएगा. On the other is the state of Orissa and one of the most powerful multinational companies in the world, Vedanta. Simple है. Last statement will be A. In the face of this apparent inequality, is it even possible for an outcome that favors the outnumbered minority? किस inequality की बात हो रही है कि एक तरफ तो they have tribals and other side they have a big multinational company. That means A will be your last sentence. So we get the sequence E, C, B, D, A. So let's start. आपसे पूछा है which of the following will be the second sentence. एक बार आपने सीक्वेंस कर लिया तो आपके लिए आंसर्स मार्क करना बहुत इजी हो जाएगा. सेकंड कौन सा है? सी है. दैट मीन्स ऑप्शन सी. फिर से देखें. अब आपसे फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट ई है, ऑप्शन ई. अब आपसे क्या पूछा है? विच इज द फिफ्थ सेंटेंस? ए इज द फिफ्थ सेंटेंस. अब आपसे फोर्थ सेंटेंस पूछा है, फोर्थ डी है. You can do these questions quickly if you are able to frame the sequence. Now look at this. Third sentence, third is B, option B. Now sequence of rearrangement का sequence पूछा है. E, C, B, D, A आपको दिया है. एक और तरीका हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें रीअरेंजमेंट्स दी हो, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से या इन सब पे अप्लाई करके भी अपना सीक्वेंस बना सकते हैं या क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इससे ये आपके मीनिंगफुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है. नाउ IBPS PO मेंस का जो एग्जाम था उसमें आपको देखने को मिला था कि बहुत सारे क्वेश्चन आरसी से थे. छोटे छोटे पैराग्राफ्स थे, उनपे एक एक दो क्वेश्चंस दिए हुए थे. मैक्सिमम पेपर वाज कवर्ड बाय दीज आरसीज. ठीक है. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि क्लर्क में भी आपको कुछ ऐसा अलग सा देखने को मिल सकता है. तो फॉर दिस व्हाट वी आर डूइंग इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ आवर प्रैक्टिस मैराथन, वी आर इंक्लूडिंग 4 to 5 क्वेश्चंस ऑफ दी शॉर्ट आरसीज फॉर यू टू प्रैक्टिस, जिससे कि you get familiar with these type of questions and you are able to practice and perform well in your exam. Now directions for 12 to 15. This is a similar set. You have four questions from a small paragraph. And these questions are really easy to do if you are able to comprehend the small passage perfectly. Read the following passage and answer the questions that follow the passage. Some words may be highlighted to help you some of the questions. Passage पढ़ेंगे. The Union Cabinet on Friday, 28 December 2018, approved the ambitious Gaganyaan program, which will send 3 astronauts to space for up to 7 days by 2022 at a cost of rupees 10,000 crores. The project was first announced by Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech this year. As part of the program, 2 unmanned flights and 1 manned flight will be undertaken. The
The first human spaceflight demonstration is targeted to be completed within 40 months of the sanction date. Prior to this, two unmanned flights in full complement will be carried out to gain confidence, the government said. The Indian Space Research Organization has developed the launch vehicle GSLV Mk3, which has the necessary payload capability to launch a 3-member crew module in low Earth orbit. Now, this question is about the Gaganyaan project of sending 3 astronauts in space. Now, let's start. Which of the following purposes will be served by the 2 unmanned flights prior to the flight carrying humans? अब आपसे पूछा है which of the following purposes will be served before, तो manned flight या flight carrying humans send करने से पहले 2 unmanned flights will be sent. Now, what is the purpose? If you see, prior to this, 2 unmanned flights in full complement will be carried out to gain confidence. किसके लिए? To gain confidence. ताकि before sending humans into space, they are able to gain confidence in this project. So ये आपको किस में दिया है? Option C में. Next, how many human space flight demonstrations will have been conducted by the ISRO prior to the Gaganyaan program? If you see, you'll see in the passage that this is the first human space flight demonstration. That means nothing has been considered before. So none of the above, yani 0 will be the answer. Further, how many days will Indian astronauts are expected to spend in space? If you look at the passage, it is given up to 7 days. Up to 7 days का मतलब होता है कि maximum 7 है, उससे ज़्यादा नहीं. तो maximum 7 days is given in option D. Last question of the day. Which of the following word is synonym of complement? Complement का मतलब होता है a thing that contributes extra features to something else in such a way as to improve or emphasize its quality. किसी चीज में extra features डालना. अब अगर आप देखें accompaniment, accompaniment क्या होता है? A musical part which supports or partners an instrument, voice या group, something that supplements या complements something else. किसी चीज को add on feature देना. तो complement का यहाँ पर synonym आपका accompaniment हो जाएगा. So, okay students, that's all for today's session. Thank you and have a nice day. Good morning friends. Today we are going to discuss practice marathon for IBPS Clerk means quantitative aptitude quiz. Okay. So today is day 18th out of 25-day working plan of IBPS Clerk means. So here as usual, the top there will be 15 questions divided in 3 sections. The sections will be data interpretation, word problem and number series. Okay. So now we will start the questions. The first question is, the work done by a man, a woman and a child is in the ratio of 3:2:1. There are 20 men, 30 women and 36 children in a factory. Their weekly wages amount to rupees 780, which is divided in the ratio of work done by the men, women and children. What will be the wages of 15 men, 21 women and 30 children for 2 weeks? Okay. So here, this is the ratio, men, women and child. This is the ratio of work done by them. Okay. So let, or we can say let wages of one man is only work done, not wages, work done. Work of one man is 3x, one woman is 2x and one child is x. Okay. So according to question, total wages will be 3x
3x into total number of men 20 plus 2x into total number of men 30 plus x into total number of children 36. This is equal to 780. From here this will be 60, 60, 120 and 36. Okay, so this will be, this is 6060 36 60 60 36 6 6 6 13 sorry 6 6 12 12 12 3 15. So this is 1 5, so this is 156. X is equal to 780. From here value of x will be 5. Okay, so work done of one man, one woman and one child can be found. Now according to the question we will find required answer. What will be the wages of 15 men, 21 women and 30 children for 2 weeks? And this wages is for 1 week. Okay, their weekly, that is 1 week. So required answer will be 5 into 3, that is 15. This is the wages of 1 man. So for 15 men this will be into 15 plus 5 into 2 10. So this is the wages of 1 woman and total number of women are 21 plus and 5 into 1 5 and total number of children are 30. So 5 into 30 and into 2. This is for 2 weeks. Okay, so here this will be 2 to 5, this will be 210, this will be 150 into 2, this will be 5, this is 213 358 and this is 22415 into 2. From here this will be 1170. Okay, so total wages for 2 weeks will be 1170 rupees. Okay, so C will be the right option. Next question, question number 2. In the second question, instead of walking along two adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut along the diagonal and saved a distance equal to half the longer side. Then the ratio of the shorter side to the longer side is. Okay, so this is the rectangular path. Okay, so this is length and this is width breadth and this is the shortest path. This is the shortest path to go from A to B. Okay, that is diagonal and this is the longest path. Okay, so this will be square root of L square plus B square according to question. L plus B minus L by 2. This will be equal to L square plus B square, that is diagonal of the rectangular field. Okay, because if he goes through diagonal, he saves half of the longer side, that is L plus B minus L by 2 will be equal to square root of L square plus B square. From here this will be L by 2 plus B and this is L square plus B square, squaring both sides. This will be L square upon 4 B square and plus LB. Okay, and this will be L square plus B square. So B square cancel and here this will be this side. So this will be L square minus L square by 4, that is 3L square by 4 will be equal to LB. From here 3L will be equal to 4B, or the ratio is shorter side to longer side, that is B by L. This will be equal to 3 by 4. This is the required ratio and in options D will be the right option. Next question,
question number third. In the third question, A and B together can complete a job in 8 days. Both B and C working alone can finish the same job in 12 days. A and B commence work on the job and work for 4 days. Whereupon A leaves, B continues for 2 more days, and then he leaves too. C now start working and finishes the job. How many days C require? Okay, so here AB can complete in 8 days, and both B and C working alone can finish in 12 days. So this is A, B, work done by them is time taken by them is 8 days, and B alone is 12 days, C alone is 12 days. Okay, so here if we found total work, if we found total work, this will be 48 unit or 24 unit. So efficiency here, efficiency of A and B together will be 3, and efficiency of B will be 2, efficiency of C will be 2. So A plus B, this is the efficiency of A and B 3, and efficiency of B is 2, so efficiency of A will be 1. Okay, so now efficiencies will be A, B and C. This will be 1, 2, 2, and total work is 24 unit. Okay, now according to question, A and B commence work on the job and work for 4 days. So A and B work for 4 days, so total work in 4 days will be 4 into efficiency, sum of efficiency of A and B 3 plus, and now A leaves and B continues for 2 more days, so 2 into 2, and then he leaves 2, and now B also leaves. Now let's see works for x number of days. So this will be 2 into x is equal to 24. From here 2x will be this will be 12 and 4 16, so 24 minus 16, that is 8, so value of x will be 4. So C works for 4 days. Okay, so here D will be the right option. Next question, question number question number 4th. In the 4th question, 2 cars are moving with speeds v1, v2 towards a crossing along 2 roads. If their distances from the crossing be 40 meters and 50 meters at an instant of time, then they do not collide if their speed are such that. Okay, so this is a crossing and the 2 cars are running like this. Suppose this is coming from this side and this is coming from this side. So here this is distance 50 meter and this is distance 40 meter. Okay, so they will not collide to each other at this instant when the time taken by both will not be equal. It means we can say here t, this is the instant of meeting point. Okay, so this should not be same for both, because if this will be same for both, then they will also collide to each other. Okay, so here according to question, so here v1 t, this is the distance of first car, so this is 40, and v2 t, suppose v1 v2 are given as speeds of the 2 cars, so v2 t will be 50, and this should not be equal to each other. Okay, so here this should not be equal to 50 and this should not be equal to 40. This should not be equal to 40 and this should not be equal to 50, because if this will be equal, then they will
definitely collide. Okay, so this is the time instant at which they will meet. So this should not be equal to this. Okay, now v1, or we can say here t should not be equal to 40 by v1, and here t should not be equal to 50 by v2, or we can say 40 by v1 should not be equal to 50 by v2, or v1 upon v2 should not be equal to 4 by 5. It means ratio of v1 v2 should not be equal to 4 is to 4 is to 5. Okay, so in options B will be the right option. Okay, next question, question number 5th. In the 5th question, a swimmer swims from point A against a current for 5 minutes and then swims backward in the favor of current for next 5 minutes and comes to the point B. If AB is 100 meters, the speed of the current in kilometer per hour is. Okay, so here the important point, swimmer start from point A against current. Against current means upstream for 5 minutes, then swims backward in favor of the current means downstream. So this is downstream and this is upstream, and comes to the point B. So here time upstream downstream is 5 minutes, 5 minutes. So the layout of this question will be like this. This is point A, okay, and this is downstream, sorry, this is upstream direction, upstream direction, this is downstream direction. So in first case it goes towards this side for 5 minutes, and now at the after 5 minutes it turns back and comes toward this side. So this is point B. Okay, this is downstream also for 5 minutes. Now in the question, the distance between these 2 points is given, A and B. This is 100 meter. Okay, so don't get me confused. This is the distance given in the question, 100 meter. So here how will solve it? AB is 100 meter. So let speed of stream speed of steamer is x kilometer per hour, and speed of current is y kilometer per hour. So downstream speed will be ds x plus y, and upstream speed us is x minus y. So according to question, this is the downstream distance total and this is upstream distance. Okay, so here this will be this distance minus this distance will be 100 meter. So this is this distance will be speed into time, that is speed is x plus y. So x plus y into 5 minutes means 5 by 60 in hours, minus x minus y into 5 by 60. This will be equal to 100 upon 1000. Okay, so this is a good question of boat and stream. ये बोट एंड स्ट्रीम का एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन.
So from here, if you solve it, this will be 1 by 12, 1 by 12. So x plus y minus x minus y will be equal to 12 by 10. Okay, 12 will be this side. So from here, this will be x plus y minus x plus y. So minus x and x cancel. So 2i will be equal to 6 by 5. So y will be equal to 3 by 5 or 0.6. Okay, so here in the question speed of current is asked, so this is 0.6 kilometer per hour. Okay, so this is the required speed of current, and if you see in options, D will be the right option. Next question, question number 6, or we can say next section. In the next section, directions from 6 to 10 is given as, in each of the following number series, one of the numbers is wrong and does not follow the pattern of the series. Choose the wrong number in the given options. Okay, so this is a wrong number type series. So we will see question number 6. The terms are 2401, 1616, 1225, 1029, 931, 882. So here we will see the pattern. If we see 2401, 1616, 1225, 1029, 931 and 882. If we take difference of these two terms, two consecutive terms, if we take difference of two consecutive terms, so 2401 minus 1616, this will be 11 minus 6 5, this is 9 minus 1 8, and this is 13 minus 6 7, so this will be minus 785, and here 1616 minus 1225 1, 11 minus 2 9, and 5 minus 2 3, so this should be minus 391, and 1225 1029. So this will be 15 minus 9, that is 6, and 11 minus 2 9 and 1, so this is minus 196, and again 1029, 931, 8, 12 minus 3 9. Okay, so this is minus 98, and this is 931 minus 882, so 931 882, this is 9, and here 12 minus 8, that is 4, so this is 49. So if you see from right side, this is divided by 2. Okay, and this is also divided by 2, so this should be also divided by 2, that is this should be 2. Okay, so here and 1 minute here. Okay, so this should be divided by 2, that is this should be 392, so this should be 1617. Okay, so this should be 1617, so this will be 784. Okay, so this will be equal to divided by 2, so wrong term is 1616. Okay, this is the wrong term.
and D will be the right option. Right term will be 1617. Okay, next question, question number 7th. The terms are 13, 20, 39, 77, 145, 248. Okay, from here if you see again differences of two consecutive terms, here plus 7 and here 29, sorry 19, here 17 minus 9 8, and 6 minus 3 3, and here this is 15 minus 7 8, and 13 this will be 15 minus 7 8, and 13 minus 7 6, and here this is 3, and this will be 4 minus 4 0, 2 minus 1 1. Okay, so here this will be, again we see differences of differences. So here this is 12, this is 19, this is 3 0, this is 13 minus 8 5, and 9 minus 6 3. Okay, so here if you see this is 7 11, okay, and this is 5. So this is not a pattern. If you see here, if this will be 12 minus, this is 12, if this will be 39, so this will be 20, and here difference will be 8. Again if this is 39, so this will be 7 8. Okay, so this will be 7 8, so this will be 6 7, so this will be 6 7. Now in this here difference will be 17 minus 9 8, and 3, so this will be here difference will be 18, or we can say here 67 39, so this will be 17 minus 8 8, and 5 minus 3 2, so this is 28, and now difference of 20 and 28 is 8. Okay, so this should be here 28, so this should be 8, so this should be 36. Okay, so here the wrong term is 7 7, because this was creating disturbance in the number series. So right term will be 7 8, and in options wrong term is 77, so D will be the right option. Next question, question number 8. In the 8th question, the terms are 5679, 5560, 5322, 4965, 4489, 3895. Okay, so here 5679, 5560, 5322, 4965, 4489, 3895. Okay, so here if you see differences of the two consecutive terms, here 5679 minus 5560, this is a decreasing number series, so 911, so this is minus 119, and 5560 5560 minus 5322. Okay, so this is 8, this is 3,
and this is 2, so minus 238 and 5322 minus 4965, so this will be 12 minus 5 7, and this is 11 minus 6 5, and this is 12 minus 9 3, so this is minus 357, and this is 4965 4489, so this is 15 minus 9 6, 15 minus 8 7, and this is 4. Okay, so this is minus 476. Now if you see, this can be written as 119 into 1, this can be written as 119 into 2, this can be written as 119 into 3, this can be written as here, this can be written as 119 into 4, so 119 into 4. Okay, and now if you see the last term 4489, though this should be 119 into 5, that is 19 into 5 95, and 5 into 1 5, so your difference should be 595. Let us check. 4489 3895, so this is 4, and this is 18 minus 9 9, and this is 13 minus 8 5, so this is not equal to 595, so the wrong term is 3895. Okay, right term will be 3894. Okay, right term will be 3894, so our answer will be 3895, that is option A. Okay, next question, question number 9th. In the 9th question, the terms are 9050 5675 3476 2147 1418 1075. So here 9050 5675 3476 2147 1418 and 1075. So here if you see differences, 9050 minus 5675, this is 5 7, and here this will be 3, and this is also 3, so here this is 3375, and here difference will be 5675 3476, 15 minus 6 9, and 16 minus 7 9. Okay, 1 minute. This is 9. Okay, and this is 15 5 minus 4 1, and this is 2, so this is 2199, and here this is 3476 2147 and this is 2, this is 3 and 1, so 1329, and here 2147 minus 1418, so this is 17 minus 8 9, 3 minus 1 2, and 11 minus 4 7, so this is 729, and here this will be 1418 10753, and 11 minus 7 4 4. Okay, sorry 3, so this will be 343. Now
if we check these terms, okay, this is the cube of 7, this is the cube of 9, so this should be cube of 11, this should be cube of 13, and this should be cube of 15. Okay, so this is the cube of 15. Okay, verified. And this should be cube of 13. So cube of, as we know, cube of 13 is 2197. Okay, so this should be 2197. So value of this should be 3476 plus 2197. 3476 2197 3 and 7 415 and 6 and 3 to 5. So this should be 5673. Okay, this is the right term and the wrong term is 5675. Okay, 1 minute. Here this should be 11 to the power 3, so this should be 1331. Okay, so here this should be 2147 plus 1331 8 7 4 3. So this should be 3478. Okay, sorry, by mistake. This should be 3478. This term should be replaced by this. Okay, so the wrong term is 3476. If 3478 is here, then here difference will be 2197. Okay, so the wrong term is 3476. Okay, so yes, C will be the right option. Next question, question number 10th. In the 10th question, the terms are 840, 1112, 1322, 1478, 1588, 1670. So here the terms are 840, 1112, 1322, 1478, 1588 and 1670. So from here, if we see the pattern, this is the another type pattern. This will be 17 square minus, or we can say here, if we see differences of these two, 112 840, so this is 2, 11 minus 4 7, and 10 minus 8 2. Okay, so this will be 272, and here difference will be 1322 1112 0 1 1. Okay, so this is 110, and now 1478 minus 1322 6 5 and 1, so this is 156. Okay, now if you see these three terms, this can be written as 289 minus 17. Okay, this can be written as 1 minute. Oh, sorry, this will be 210. Okay, because 3 minus 1 2, so this can be written as 225 minus 1 5, and this can be written as this can be written as 169 minus 1 3. Okay, so
This is the square of 17. So the total, this can be written as square of 17 minus 17, and this can be written as square of 15 minus 15. This can be written as square of 13 minus 13. Okay. So next should be 17, 15, 13. So square of 11, 121 minus 11, 11 minus 11. So this should be 110. Okay, and this should be square of 9. Square of 9 means 81. 81 minus 9. So this should be 72. This should be 72. So here let us check. At this time, this is the correct pattern. Okay, we have to check these two terms. So here 1588 minus 14780. Okay, 1 1. Okay, this is also right. So here 1670 minus 1588. So this is 2, and here this is 16 minus 8. Okay, so this is the wrong pattern. This is the wrong term. Sorry, don't say wrong pattern. This is the wrong term. So 1670. Okay, so our answer will be D, 1670. The right term should be 1588 plus 1588 plus 72, that is 0, and 615 1560. This should be the right term, and this is the wrong term. Okay, so D will be the right answer. Okay, next question, or we can say next section. Section 3rd. In the 3rd section, this is a data interpretation. The directions from 11 to 15 is given as: study the following bar graph carefully and answer the following questions. Total investments in thousand of Abhimanyu and Gaurav in 6 different schemes, A, B, C, D, E, F. Okay, and percentage of Abhimanyu share in total investment. Okay, so the first bar graph shows total investment in thousand of Abhimanyu and Gaurav in 6 different schemes, and this is the percentage of Abhimanyu's share in total investment made in 6 different schemes. Okay, so we will go on question number 11th. If scheme A offers simple interest of R% per annum and share of interest earned by Abhimanyu in scheme A is 1100, then find the value of R if investment is made for 2 years. So A offers R% simple interest. So total investment in A is 70,000 and the money share is 44%. So some, yeah, we can say share of Abhimanyu, share of Abhimanyu in scheme A is 44 into 700, because 70,000 upon 100 will be 700. From here 44 into 7, this will be 30800 or 30,800. So, and the interest earned by Abhimanyu in scheme A is 1100. So according to question, 1100 will be equal to 30800 into R into 2 upon 100. From here we will find the value of R. This will be 110000 upon 0061 and 6. Okay, so this will be here. If you simplify this,
R is equal to 1100 upon 616. If you simplify this will be 25 upon 14%. Okay, so the required rate will be 25 upon 14%. So A will be the right option. Next question, question number 12. In the 12th question, what is the ratio of total investment of both Abhimanyu and Gaurav in scheme A, B, C together to the total investment of Gaurav in scheme A and E together? So total investment A, B and in scheme A, B and C by both. This is A, B and C. So total investment in A, B and C. This is 70 plus 65 plus 8 60 5 6 6 12 7 19,000. Okay, and investment of Gaurav in scheme A and E. Investment of Gaurav in scheme A and E. This is in A, investment of percentage of investment of new is 44% and in E is 30%. So this will be 56% of total investment in A is 70,000 plus this is 70% of 40000. Okay, so from here this will be 2 zeros 2 0 cancel. This is 56 into 7 7 into 6 42 and 7 into 5 35 and 4 39 00 plus 7 into 4 28 000. So this is 8 9 17 sorry 8 9 17 8 a 7 remainder 1 3 2 5 1 6 and 2 0 0. Okay, and this is 195 000. So the required ratio will be 195 000 upon 672 1950 upon 672. From here, if you simplify this here, if you simplify this will be 975 upon 336 or 325 upon 112. Okay, so this will be the required ratio, simplified form 325 upon 112 and in option C will be the right option. Okay, next question, question number 13th. In the 13th question, average of investment made by Abhimanyu in scheme B and C together is what percent more or less than the average of investment made by Gaurav in scheme A and F together? So investment of Abhimanyu in B and C, B and C, B, C, and investment of Gaurav in A and F, A and F, total A and F. Okay, so here by Abhimanyu, this is B and C 35%. So average of investment will be 1/2, 35 into
65,650 plus in C 50%, and this is 60,000, so this will be 30,000. Okay, and this is the average. So if we simplify this, this will be 52750 upon 2 and by Gaurav 1 by 2 in A and F. A 44, so 56 into 700 plus 55, or we can say 60 into 550 from year 1 by 2. This will be 39200, and this is 6 into 5 30, 6 to 5 30, 33, so 33,000. From here this will be 7220 upon 2. Okay, so this is the average of Gaurav, this is the average of Manu, so the required percentage will be here this is greater than this, so here this will be 72200 upon 2 minus 52750 upon 2 upon 72200 upon 2 into 100. Okay, so 2 cancelled and 72200 52750 0 5 11 minus 7 4 and 11 minus 2 9 and 6 by 6 minus 5 1, so 19450 upon 72200 into 100, 0 to 0 cancel, 19450 upon 722%, and if we simplify this 7 into 2 14 and 7 into 3 21 greater than this, so 7 into 2, so the 10th place will be left side digit will be 2, so here are in options 1 2 3 3 are okay. So if you simplify this or solve this, this will be approximately equal to 27%. Okay, so E will be the right option. Okay, so now we will move on next question, question number 14th. In the 14th question, if scheme B and C offer simple interest at the rate of 10% and 100 upon 3% respectively, what will be the total interest obtained by scheme B and C in 3 years? One of them invested in either schemes B or C for all the 3 years, while Gaurav invested in scheme B for 2 years and Manu invested in scheme C for 2 years. Okay, so this is this is a little bit complicated question. Okay, so first of all we have to understand it. B and C offered interest 10% and 100 upon 3% respectively. So one of them, either Gaurav or Manu, invested in either scheme, in either B or C for all the 3 years. So here one condition is also given. Gaurav invested in scheme B for 2 years. So Gaurav in scheme B and C for 2 years. So in scheme A, investment of Gaurav will be for 1 year. Okay, and for in B 2 years, investment of Gaurav in scheme B is 2 years. So in C this will be 1 year. So 2 years of Manu will be in, and Manu BC in this 1 year and in this 2 years.
Okay, so from here investment of investment of Abhimanyu in B. In B, this is 65,000 and percentage is 35. So 650 into 35 from here. This is 22750. So investment of Gaurav will be in B will be 65000 minus 22750. This will be 42250. Okay. Again investment of Abhimanyu in C. This will be, this is C, percentage 50%. So this will be directly 30,000 and of Gaurav will be 30,000. Okay. So interest obtained, total interest obtained from scheme B. Okay, total interest obtained from scheme B. So in scheme B, Gaurav and Abhimanyu, this is 1 year and this is for 2 years. So in scheme B, total amount was 65,000. So 65,000 into 10 into 2 upon 100. This is rate of interest for 2 years and remaining. In this investment of Abhimanyu and investment of Gaurav included. So Gaurav invested in scheme B for 2 years. So again this will be, and Abhimanyu invested in scheme B for 1 year. This is for 1 year. So here this will be 22750 into 10 into 10 upon 100 for 1 year. So from here total interest obtained will be 65 into 2, 130. So 13,000 plus here 2275 from here. This will be 15275. Okay. So this is the total interest obtained from scheme B. Now total interest obtained from scheme C will be, total amount invested in scheme C is 60,000. So 60,000 into rate of interest 100 upon 3%. So 2 into 100 upon 300. Okay. So this will be interest obtained from scheme C on total amount, and Abhimanyu, Gaurav invested in scheme C for 1 year. So investment of Gaurav in scheme C is 30,000 for 1 year. Rate of interest is 100 upon 3. That is 100 upon 300. From here, this will be 2. So 2 into 2, 4. So 40,000. And here this is 10,000. So this will be 5000. 50,000. This is the interest obtained from scheme C. So total interest will be, total interest is equal to 15
275 plus 5 4 times 0, that is 75275. Okay, sorry, 65275. Okay, so this is the total required interest obtained from scheme B and C according to the given conditions in the questions. And if we see in options, then A will be the right option. Okay, next question, question number 15th. In the 15th question, amount invested by Gaurav in scheme DEF together is what percent of amount invested by Manu in scheme BCD together? Approximate value पूछ रहा है यहाँ पे. So amount invested by Gaurav in scheme DE and F. DEF. So by Gaurav in D, E and F. In D 40%, by Manu, so by Gaurav will be 60%, and 800 plus in E 30%, so 70%, 400 plus 60%, 550. From here this will be 48000 plus 28000 plus 33000. So 8 8 16, 16 through 19, remainder 1, 3 2 5 5 4 9 9 1 10. Okay, this is the investment of Gaurav in DEF and investment of Abhimanyu in BCD. So by Abhimanyu in B, C and D. This is 35%, so 35 into 650 plus in C 50%, so this will be 30,000 directly. This is 60,000, and in D 40%, so 40 into 800. So if you solve this, this will be 22750, and this is 30,000. This is 32000. From here, if you simplify this, this will be 84750. Okay, so the required answer will be 109,000 upon 8475 into 100. Okay, so from here if you simplify this, this will be approximately equal to 127.87, or we can write this 128%. Okay, so this is the required answer, 128%, and in options B will be the right option. Okay, so this is the end of this quantitative TT quiz. Thank you so much friends for listening me, and if you have any doubt, you can ask in comment box. Okay, so thank you so much friends for listening me, and best of luck for your exams.